दोनों की सहमति होने से, मानक होने से इसको ही चैलेंजिंग रूट किया गया है। माने पिक एंड चूज नहीं करेंगे, एक लिस्ट के ऊपर कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया है। महबूबा मित्रा। Sir, thank you, sir. Sir, I had my honourable colleague, Ms. Manish Tiwari, put forward his point of view. I'd like to put out another point of view. The central school there is only one Kendriya Vidyalaya there, and like I'm sure many of my colleagues, we face this trouble every year that there are more than 10. 10 quota is very small, I think, but to do away with the quota completely would be very, very difficult, difficult. I would urge that since there are some people in some areas where there are other schools and they can take advantage, in areas like ours there's only one CBSE school. People with transferable jobs need that. So perhaps the ministry for this Parliament Secretariat can have a separate cell where those people who need more quota, we can get that. It will be very difficult if the quota were removed, sir. Very difficult. सर, आपने एक आदेश दिया ही के सुरेश जी, क्या विषय यही? हाँ, माई कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ सर, ओपनिंग ऑफ द केंद्रीय विद्यालय इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सदन में जितने लोग बैठे हैं ना, सब केंद्रीय विद्यालय की मांग करेंगे। एक इधर से हाथ खड़ा, इधर से हाथ से। सर ऑनरेबल स्पीकर सर, केंद्रीय विद्यालय की नियम प्रक्रिया बता दी है। सर ऑनरेबल स्पीकर सर, ओपनिंग ऑफ न्यू केंद्रीय विद्यालय इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी कोट्टारकरा, Kollam district, Kerala. Kerala government already transferred 5 acres land to Kendriya Vidyalaya Sangathan, and also temporary accommodation also hand over to Kendriya Vidyalaya, and also the regional commissioner Kendriya Vidyalaya inspected along with the central PWD officials. So everything is ready, but the government of India is not sanctioned the project. That's why we are waiting for last 10 years for starting this school. So I would like to, Honorable Minister through you, sir, whether every formalities has been completed in Kottarakara, Kollam district for Kendriya Vidyalaya, but Government of India is not sanctioning. I would like to ask Honorable Minister whether you are going to sanction. Honorable Member, शून्य काल और प्रश्न काल में अंतर समझो। ये शून्य काल नहीं चलना चाहिए। प्रश्न काल में मेरे यहाँ खोलो, मेरे यहाँ खोलो। प्रश्न काल और शून्य काल डिफरेंस है। मैं पूरा शून्य काल आपको अलाउ करता हूँ। क्यों बालू जी, सही है ना? इसलिए क्वेश्चन नंबर 243 नो आंसर। एक पॉलिसी मैटर बता दिया मंत्री जी ने, उस पॉलिसी के तहत चलाया। मंत्री जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं सर, मैं फिर आप ही की अनुमति से एक विषय कहना चाहूँ। माय डियर फ्रेंड सुरेश जी, प्लीज अप्रिशिएट वन थिंग, डोंट गो बाय द हाफ बेक्ड केक और हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। आई एम रेडी टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू। जो आप कहते हो कि मेरे वहाँ मानक के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया, अकोमोडेशन दे दिया, मैं जिम्मेवारी के साथ आप सभी की कंस्टिट्यूंसी में जो जो पेंडिंग इशू है, विभाग की क्या, केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्या व्यू पॉइंट है, मैं आपको लिख के दूंगा। उसमें कुछ कुछ अनामोली है। यह कहना अनुचित है कि भारत सरकार खोल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। हम जो मानक के आधार पर खोलने के लिए पूरा ओपन है। हर एक 2-3 साल में एक बैच निकलती है, लेकिन फिर मैं विनम्रता से कहूं, बच्चों को पढ़ाने की हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था में जिम्मेवारी है, यह ज्यादातर भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए है। हर एक जिले में सेंट्रल स्कूल फिर भी खुल चुका है, सबके प्रयास से खुल चुका है। यह अधिकार की विषय नहीं है, यह राज्य की जिम्मेवारी है। मैं इस सत्र के दौरान सभी को अपने अपने विधान लोकसभा के अंदर बैठिए, तो अगर गोगोई जी बैठिए, ओके, आप उसकी पैरवी मत करो। नहीं, 7 बार चुन के आने से नियम बदल नहीं जाता है। नहीं बदलता अध्यक्ष महोदय, 7 बार आने से नियम बदल नहीं जा सकता है। सुरेश, डोंट आर्ग्यू इन फेवर ऑफ सुरेश जी। देखिए, ये प्लीज नो अलाउ, कोई इनका रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ये आप ये 0 ओवर नहीं है सदस्य अध्यक्ष जी, आपने कहा। क्वेश्चन नंबर 243 उन्मेष पाटिल, आपको पैरोकार बनाया कि उन्होंने? यहाँ कोई वकील नहीं बनता है सदन में, ध्यान रखना आज के बाद। यहाँ वकालत की सिस्टम नहीं है। क्यों मनीष जी, बैठिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 243 उन्मेष पाटिल, हिना गावित, मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल।
CTR Baluji. Sir, there is Sarva Shiksha Abhiyan. Now the question pertains to Samikra Shiksha Abhiyan. They are going, the government is proposing to impart quality education from preschool to 12th standard for the next 5 years. I want to know whether there was any shortcomings in the Sarva Shiksha Abhiyan. For that matter, you are introducing a new system. That is one thing. And what are the targets for the state board examination and as well as central board examination, which the government has fixed now? Are you going to introduce this education system in mother tongue itself? These are all the questions. Honorable Speaker, sir, this is the name of the scheme. This is the name of the scheme. During Atalji's period, where Honorable Baluji was a part of government, I think he is remembering all these old schemes. Sarva Shiksha Abhiyan. Since last few years, the old scheme has been with some new modification and same as Samagra Shiksha Abhiyan. Essentially, this is a 60-40 centrally sponsored scheme. States are free to run their own course, own language, and in this national education policy, much emphasis is given to mother tongue. And in this Samagra Shiksha Abhiyan, one of the priority area is to create local language system, be it digital library, be it classroom, be it smart through local language. This is a very progressive scheme and all the states are cooperating on this issue. This is a very progressive step implemented by Modi government. Now Sri Krishna. Thank you, sir. So Andhra Pradesh state government is spending heavily on the education to the tune of almost 12% of the budget we are spending. And we have come up with various new schemes like Aamoda, wherein we are giving parents 15,000 rupees if they send a kid to the school, and also Nadu Nedi, where we are refurbishing the schools. But sir, if you look at the data of Samagra Shiksha Abhiyan that you are talking about, in the last year, the percentage spent as proportion to the approved budget, not only Andhra Pradesh, but Maharashtra, Himachal Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, Kerala, Karnataka, Telangana and West Bengal, all these states have spent below 60%. Yes, it is a 60% is from the central government and 40% is from the state government. But still, these states could only drop below 60%. So what I request or what we want to ask you is there any consultation made with the states so that the scope of this scheme can be improved so that the states can draw much better and utilize these funds much better? Thank you. Speaker, sir, this is a very good question my friend has raised. Yes, there is a slow in taking the central share from the Delhi. But there is a basic difference, there is a basic reason. Because now we all are in the age of transparency. Minister of Finance has given a new pattern of disbursement to all the line ministry in Government of India, and all the line ministry are also persuading the respective state government come through more transparent manner. Government of India is going to release the fund when you will deposit from your state budget to the respective department your 40%. Immediately within few seconds, Government of India is going to release that money. Due to their own financial structure, different states, lot of states are taking the progressive stance. Lot of states have their own way of functioning. Government of India is constantly, especially Finance Ministry and all the line ministry, we all are persuading, and lot of states are also. This is a transitional phase. I hope by this end of March 31st, there will be substantial improvement in all these areas. This is a new pattern Government of India is emphasizing. This money belongs to the common man of this country. It has to be spent pie by pie in a more transparent manner. This is the effort of our government, and state government is cooperating. Gradually, it will improve. State has to adhere the financial discipline jointly agreed by Government of India and respective state governments. Question number 244, Srimati Aparajita Sarangi. 244. माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन पर रखा गया है. Honorable Speaker, sir, we are well aware of the fact that the differently able children in our schools require very special care and protection. Sir, online teaching for these children can only be a stopgap arrangement because they need personal care. Sir, if we go by the established norms, 3% of the children population
the population that goes to schools, out of these 3% of the children's population, in fact, those who are differently abled should be integrated with the school system. The norms say that 3% of these children are supposed to be differently abled and they should be integrated with the schools. But unfortunately in India, 0.5% to 0.6% of these children have been detected and brought into the school system. So I would like to request Honorable Minister Education to let us know whether there is a roadmap, there is a strategy, there is a plan of action of Government of India to move from 0.5, 0.6% to 3% of these differently able children and integrate them with the schools. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, भारत सरकार के माध्यम से चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन फिर भी अभी दिव्यांग छात्रों के लिए अभी जो समग्र शिक्षा अभियान की बात हम कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समग्र शिक्षा के माध्यम से कि सभी को बराबर की शिक्षा मिले, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लगातार राज्य क्षेत्र और नीतिगत पहलों, दिशा निर्देश, डेस्कटॉप, मोबाइल, टेलीविज़न आदि के माध्यम से भी बच्चों की पढ़ाई, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। और सरकार के माध्यम से समय समय पर हम संघ राज्य क्षेत्रों को भी हम अपनी ओर से गाइडलाइन देते हैं कि किस तरह से वो बच्चों की पढ़ाई वो कर सके। और इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह अभी इस कोविड महामारी के समय में भी जो परेशानी हुई थी, पीएम विद्या के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जो कि लॉस न हो, लर्निंग लॉस न हो, उसके वजह से लगातार पढ़ाई ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से चलाया जा रहा था। और इसी के तहत इस बार बजट में भी लगभग 200 डीटीएच चैनल की भी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, ताकि सभी बच्चों को समान और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके। सप्लीमेंट्री। Sir, to address the issue of learning disabilities of these differently able children, we need to have a large pool of special educators all across the country. Sir, the Rehabilitation Council of India actually raises this pool, gives recognition to institutes to actually train people to become special educators. But unfortunately, I was going by the statistics, the RCI has given recognition to very few number of institutes across the country. So, sir, in this regard, I would like to ask whether the Ministry of Education, in association with the RCI, can think of a strategy by which, huge number of institutes, those who are eligible, can be given the recognition so that more number of special educators can come. Honorable Minister. Speaker, sir, this is a very genuine concern shown by Honorable Member and all the section of the House. Let me put forth, this is a very sensitive issue. Our government, when Prime Minister Modi took charge, he redefined the entire issue. Now, he has broadened who all are disabled, who all are divyang. In India, this is a very new issue. All these dysfunctions, malfunctions are there within our own family. But due to, please let me, I am not so expert like you, Saiji. Please, Mantri ji, please. Speaker sir, this is a very sensitive issue. The thing, lot of मित्र लोग ज्यादा हैं आपके, इसलिए आप. No, I am not expert like Tai. इधर ही ले. She is a knowledgeable lady and is a very expert person. I am not so. So, with my little understanding, I would like to explain. If I cannot convince them, I will come to them. I will invite them, all of them, to my office, and we will interact. This is a very genuine issue raised by honorable member. Sir, there is a lack of awareness within society who all are they in disabled person in our family. Sir, when I took charge of this sector, in the initial days, within first week of my taking charge in the parliament, I face a question, dyslexia. Sir, I can candidly admit, I never heard this kind of terminology in my career. So when I asked my colleague,
व्हाट इज द हिंदी, इसकी हिंदी क्या होता है। सर हिंदी करने के लिए सर हमारे पास कोई वोकाबुलरी में शब्द नहीं था। हमारी घरों में इस प्रकार की बच्चे भी हैं। भारत में अभी जो देयर इज ए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, lot of emphasis, lot of priority has given on this issue. Addition to that, during this COVID period, हमने तो डिजिटल एजुकेशन, दिशा टीवी वगैरह लगाए, लेकिन how to educate the disabled students, there's a new challenge. We all are concerned, experts are working on that. I would like to seek advice of this house, how to create more trainer, more school, who all are dysfunctional, let us know them. Collectively, we have to face this challenge. We have to educate all these segments. According to me, the population of this category of different kind of disability is around 10%. How to handle them? This is a challenge. We all have to work together. Iti Mohammad Bashir ji. Education of just differently abled students is really deplorable, sir. The first thing I would like to say is development of sign language. That is very much needed. Facility is very less. That is number one. Number two, application of educational technology for the upliftment of differently abled students. Sir, worldwide, a lot of technology updation is coming up for the development of the education of the differently abled students. My humble question to the Honorable Minister is, number one, whether you should take effective steps for developing the sign language of the country, and the second one, application of the education technology for this particular section. Would you take interest in that also? That's my question. Speaker sir, both the advice are very pertinent. I am assuring honorable member in both the sector regarding sign language and implementing technology for education of the physically disabled students. Both we all are working on that. This is a good advice. We will take care of that. Shri S.S. Ahluwalia ji. अध्यक्ष महोदय, ये एक विषय ऐसा है कि जब आप किसी स्कूल का दौरा करें या गांव में जाएं तो हर एक दूसरे तीसरे घर में आपको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। और सरकार की जो नीति है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN, इसके तहत बजट में प्रावधान भी रहता है, पर स्कूलों में जाकर पता लगता है कि कितने % बच्चे वहां पर हैं। जो हमारी पहली प्रश्नकर्ता ने सवाल किया, स्कूल में जाके पता लगता है कि बच्चों की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता नहीं। कारण क्या है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर उसका सर्टिफिकेट लेना होता है। माँ बाप के पास उतना समय नहीं होता कि जाकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो सके। क्या सरकार इस पर गौर फरमाएगी कि ऐसे बच्चों की जांच और सर्टिफिकेट इशू करने की प्रावधान स्कूल में ही कैंप लगा के किया जाएगा? तब मैं समझता हूं सारे बच्चों को ये सुविधा मिल सकेगी। और मेरा दूसरा पार्ट है अपने सवाल का कि ऑनलाइन क्लास के लिए ये इस तरह के बच्चों को ऑनलाइन में काम करने के लिए उनकी उंगलियां या उनकी स्पीच से भी नहीं पता लगता, तो क्या उनकी स्पीच का एक रिकॉर्ड तैयारी करके, क्योंकि कंप्यूटर इज ए डिसिप्लिन स्लेव सर, वो आपकी भाषा को समझता है। एक बार आप बोले, दो बार बोले, तोतला भी बोले और गूंगा भी इशारा करे, उसको समझता है। तो क्या उनके लिए कुछ प्रोग्राम कराएंगे और इन तरह के बच्चे के लिए एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सके? स्पीकर साहब, जैसे मैंने बड़े विनम्रता से इसको स्वीकार किया कि ये दुनिया अभी 21वीं सदी में भी भारत के लिए बहुत इनएडिक्वेट है। क्या ना, हमारी जानकारी, हमारी अवेयरनेस, पिछले 7 सालों में हमारी सरकार इस पे बहुत काम किया है। मैं सारे सजेशंस को, ये भी अच्छा सजेशन है जैसे पूर्व सदस्य ने पूछा, ये सारा विषय पे मेरे जानकारी के हिसाब से विभाग ने और विभाग से बाहर इस प्रकार की बहुत सारे चिकित्सा की दुनिया के लोग, मनोविज्ञान की शास्त्र की दुनिया के लोग उसमें बहुत काम कर रहे हैं। सारे विषय के एक वाइडर कंसल्टेंसी में हमारी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की काम राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तरों पे हो रहा है।
इसी आयाम में भी हम कई सारे विमर्श कर रहे हैं। ये सारे विमर्श उसी दिशा में है। सबको हम समाहित करके निश्चित रूप में अपने आने वाले पाठ्यक्रम, आने वाले पेडागोजी, आने वाले मेथोडोलॉजी में लाया जाएगा। ऐसे मंत्री जी, राज्य सरकार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप सलाह दे सकते हो कि स्कूल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सलाह दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? महोदय गौरव गोगोई जी, राज्य सरकार को बनाना है, राज्य सरकारों को सलाह दे सकते हैं। Thank you, Honorable Speaker. First of all, let me appreciate Honorable Member of Parliament Aprita ji for raising a very sensitive question and also appreciate Honorable Minister for his frankness and his dedication to this subject. Sir, we often talk about people living and with disabilities and children living with disabilities, but do we give them space in policy making? Do we give them space in our policy planning institutions? If they are given space, I'm sure we will get the necessary suggestions. So my request is that you have, as you Minister talked about, which is the National Curriculum Framework, there is also the National Education Policy Task Forces which is being set up in different states. अगर हर मंच में people living with disabilities और experts को स्थान दिया जाएगा, तो उस मंच में वो अपनी बात रख पाएंगे और हम भी आने वाले समय में उपयुक्त कदम उठा पाएंगे। तो यही मेरी दरख्वास्त सरकार से रहेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये एक हेल्दी डिस्कशन सदन में हो रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय हमारे देश में है जिसमें शायद सदन बिना विवाद की सहमत हो रहा है। मैं निश्चित रूप में गौरव गोगोई जी ने जो विषय उठाया, आज की राज्य में जो स्टेट SCF बना है, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बना है, इसकी विमर्श हम जिला तक भी लेके जा रहे हैं, स्टेट में नहीं जिला तक भी लेके जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया के लोग भी, तज्ञ और प्रभावित लोग, नीति निर्धारण से लेके ऊपर तक उसमें इन्वॉल्व हो, उसकी हमारी कोशिश है। और भी कोई सजेशन इस सदन की और सदस्यों के माध्यम से आएगा, उसको हम सहृदय अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 245 श्री नव कुमार सडनिया। सर, क्वेश्चन 245 माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दी गई। ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू सर, आपने मुझे पूछने का मौका दिया। पिछले 8 साल में पहली बार हमको ये मौका मिला। सर, मिनिस्टर का जो रिप्लाई है उसमें हमारा जो काउंसिल है 6 शेड्यूल का, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में या स्पेशल पैकेज के अंदर टोटल 102 प्रोजेक्ट में 1170 करोड़ का पैसा दिया है और इसमें 56 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और 46 प्रोजेक्ट 576.57 करोड़ का ऑनगोइंग है, लेकिन इसमें डिटेल्स नहीं है। सर, मुझे इसलिए ये पूछना है, पिछले बहुत टाइम से कार्बी आंगलोंग और BDC में हजारों करोड़ का घोटाला होने का केस भी चला है और पार्लियामेंट में भी आया है, क्योंकि वहाँ कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। 2016 से जब दिशा कमेटी बनाया, सिर्फ मुझे इसके लिए हटा के एक राज्यसभा का MP को दिशा का कमेटी बन गया, चेयरमैन बना दिया, लेकिन अभी उसका काम खत्म हो गया, अभी हम फिर दिशा का कमेटी में आ गया है चेयरमैन। तो इसलिए मेरा मांग है, इसको दिशा के अंदर लाना चाहिए। और स्टेट लेवल में जो कमेटी होता है मॉनिटरिंग का, वो भी नहीं है। और हम 5th सीधे एरिया में भी घुमाए हैं, इसलिए भी इस एरिया में भी हमको बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है, जो ट्राइबल सप्लाइन का पैसा है वो इधर इधर दूसरे एरिया में डाइवर्ट होता है। तो स्पेशली हमारा मिनिस्टर से मुझे पहला है ये डिटेल्स डाटा हमको चाहिए, और दूसरा मॉनिटरिंग के बारे में आपको क्या सोच है उसको बताना है। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसके संदर्भ में पूछा है, पूरे देश में दिशा के एक गाइडलाइन है जिसमें सभी मंत्रालयों के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और उसमें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी कामकाज की समीक्षा दिशा स्तर पर कार्यान्वयन की दृष्टि से किया जाता है। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि दिशा की बैठक में आप इसकी चर्चा कर सकते हैं और इसमें अगर कहीं आपको किसी तरह की कठिनाई ऐसा लगता है
तो हम यहाँ से उसके लिए गाइडलाइंस यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अलग से देंगे। ऑनरेबल मेंबर। ठीक है, लेकिन मेरा जो 6 एरिया है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उसमें डीसी मेंबर सेक्रेटरी होता है दिशा का, लेकिन डेवलपमेंट के पार्ट में उसमें कोई पार्ट नहीं है उसका, क्योंकि ये सारा ट्रांसफर सब्जेक्ट है काउंसिल का। पिछले हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बना है उसमें एक डिसीजन लिया है उन लोगों ने कि डीसी को कुछ कुछ एरिया में उसको पावर देगा, एसओपी निकलेगा उसे, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया एसओपी नहीं निकला है। डीएम भी हमको पूछते हैं सर हमको पता नहीं है अभी किसमें हमको क्या करना है क्या बोलना है। तो हमारा मिनिस्टर से आग्रह है अगर एसओपी भी उसको ठीक तरह के बता देगा जो क्या करना है वो तो होगा। और आपसे हमारा गुजारिश है आप एक बार स्टेट गवर्नमेंट को भेजिए जो दिशा के अंदर ये टीएसपी का जो मैटर है उसको आना, उसमें 15 फाइनेंस का भी मैटर नहीं आता है क्योंकि ये पैसा काउंसिल में जाता है। और सर दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो अभी प्रश्न नहीं था कि आपका सर एक है जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल का मेरा सेक्टर एसटी का 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट अभी 5 डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तमुलपुर भी बन गया है, उसमें सिर्फ एक एकलव्य मॉडल स्कूल है और उसका भी हालत खराब है। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार मिनिस्टर को उससे एक बार जाके विजिट करना चाहिए और बाकी जितना डिस्ट्रिक्ट है उसमें और एक एकलव्य मॉडल स्कूल जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। इसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसे हम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है और जिसके बारे में उन्हें थोड़ी शंका है, पूरे देश में सभी जिला के माध्यम से ही एजुकेशन होती है। व्यवस्था के दृष्टि से राज्य सरकार कुछ ऑटोनोमस काउंसिल या जिला स्तरीय जो हमारे निकाय है उसके माध्यम से, तो आपने ठीक ही कहा है। इसको जानना चाहे मैं इस संदर्भ में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चूँकि हमारा इन सारे कार्यों के मामले में गाइडलाइंस जारी करता है, हम उसके साथ बात करके इसका समाधान करेंगे। दूसरा जो उन्होंने पूछा है एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में, उसकी जो मापदंड तय की गई है उस मापदंड के आधार पर स्वीकृति दी गई है। और तीसरा उन्होंने यह विषय जानना चाहा कि उन क्षेत्रों में जो विद्यालय है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और वहाँ जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य के साथ मिलकर के बातचीत कर लूँगा और ज़रूर जाऊँगा ताकि मैं वहाँ की वास्तविकता से रूबरू हो सकूँ और उसका कोई अगर आवश्यकता पड़े उसका समाधान करें। श्री अर्जुन लाल मीणा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो क्वेश्चन का जो विस्तृत उत्तर दिया है। मैं भी शेड्यूल 5 जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये जो आदि राज्य हैं शेड्यूल 5 में, वहाँ से आता हूँ और मेरा अपना संसदीय क्षेत्र उदयपुर है। उदयपुर के में इन्होंने इनके मंत्रालय के माध्यम से 2751 के तहत कितनी धनराशि दी और कितनी अभी तक खर्च हुई है पिछले 3 साल का मैं चाहता हूं कि वो उत्तर देवे और जो राशि दी है वो अभी तक खर्च हुई है नहीं हुई है। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय खोले हैं। इसके लिए मैं सरकार को और मोदी जी को और मंत्री जी को धन्यवाद जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस वैसे हमारे पास में राजस्थान में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है उसकी आंकड़े हैं, मैं उनको उपलब्ध करूँ। श्री अजय रंजन चौधरी जी। सर, मंत्री जी कुछ वक्त पहले ये कह रहे थे कि दिशा कमेटी है हर डिस्ट्रिक्ट में और दिशा कमेटी से आपका सारे जानकारी लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक फ्रेमवर्क है सदन की तरफ से ये बनाया गया है। लेकिन मेरी खेत के साथ ये कहना पड़ता है सर, बार बार ये सदन के अंदर गुहार लगा के बावजूद आज तक मैंने पिछले 12-13 साल में कोई विषय पे, ये ट्राइबल विषय नहीं है बल्कि हर विषय पे कोई भी चाहे विषय हो जहाँ जहाँ दिशा कमेटी की देखभाल करने के अधिकार है, दिशा कमेटी की भाग लेने का, शिरकत लेने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, आज तक ये मीटिंग नहीं बुलाया जाता है। फिर भी मैं हुआ कि चेयरमैन भी हूँ, तो मैं ये सरकार को, ये सदन को और सर आज स्पीकर साहब आपको भी कहना चाहते हैं कि ये सर कंपलसरी कर दीजिए कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में दिशा कमेटी की मीटिंग
सही सलामत ना बुलाया जाए तो वहाँ फंड रिलीज करना बंद कर दीजिए, फंड रिलीज करना बंद कर दीजिए, तब ये सबक सीखेगी और हम जैसे नुमाइंदे को दिशा कमेटी की मीटिंग में बुलाने में मजबूर होगी। सर ये मैं दरखास्त करता हूं सर, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट में काफी ट्राइबल है, मेरे क्षेत्र में काफी ट्राइबल है, उन लोग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर सारे सदन बैठ के चर्चा करें और फैसले की मजबूरन उन लोग को मजबूर करे हर स्टेट को कि वो दिशा कमेटी की मीटिंग बुलाए। मोहंती जी। Sir, many thanks for giving me the opportunity, sir. Sir, these last 2 years have really taught us that if we are thinking about overall development, then the two major sectors and most sensitive sectors are health and education both. And when we are talking about the tribal development, overall development, through you to the Honorable Minister of Tribal Affairs, I would like to, sir, ask, so that is he aware that there is a disease called sickle cell disease in tribals? It's a very critical disease, and it is genetic. It is a genetical disease which cannot be cured. Survival is it's almost impossible, sir. और लिमिटेड होते हैं जिनकी उम्र होती है सर, जो बच्चों को सिकल सेल होता है जेनेटिक वजह से, ट्राइबल बच्चों को, उनकी उम्र भी सीमित होती है, 22-25 साल तक वो जिंदा रहते हैं. बट सर दिस कैन बी इरेडिकेटेड. देयर आर एक्सपर्ट्स दोज हु आर कमिंग अप विद मेनी सजेशंस जो इसको इरेडिकेट करने के लिए पूरी तरह से दावा कर रहे हैं. और मुझे जितना मालूम है कि केंद्र सरकार के पास में ये अपना एक मेमोरेंडम लेकर गए भी थे, मिले भी थे कुछ महीने पहले. So through you, I want to ask, sir. आपका प्रश्न क्या है? Yes, sir. Through you, sir. I'm just asking it, sir. Sir, I'm asking, sir. Sir, has the government been approached with such kind of any proposal? If the government admits, then when and how to implement or execute this eradication? And if no, if the government has not yet been approached by anyone, by any organization, then will the government agree to look into this grave health issue in tribals and welcome such kind of experts for discussion and look into this matter very seriously immediately? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये सब प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि जनजातीय क्षेत्रों में और जनजातीय लोगों में इस तरह की समस्याएं अधिक हैं. और इस विषय पर हमारा मंत्रालय बहुत संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर कई बार कई देशों के भ्रमण के दौरान भी इसकी चर्चा की है और देश में भी किया है. अभी हम ICMR के साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके 2 पार्ट में काम कर रहे हैं. एक तो रिसर्च पार्ट है और दूसरा डेटाबेस बनाने का कि किन राज्यों में किस तरह के कितने और कितनी संख्या में है, उसको हम कैसे डेटा बनाएं और उसका एक काउंसलिंग सिस्टम कैसे डेवलप करें. क्योंकि अनुवांशिक जब हम कहते हैं तो उसमें जितना अधिक जागरूकता फैलेगी उतना ही अधिक उसका समाधान निकलेगा. वो एक पक्ष है. दूसरा पक्ष ये है कि जो इससे प्रभावित है उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट सरल तरीके से कैसे उपलब्ध हो. कुछ ट्रीटमेंट है जिसको स्थानीय स्तर पर नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए भी व्यवस्थित किया जा रहा है. उसके सभी संस्थाओं के साथ हम लगातार जितने भी देश के ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो रिसर्च बेस्ड है, चाहे वो एम्स हो, गंगाराम हो या अन्य देश के अन्य हिस्सों में जो अच्छे अस्पताल है या जितने रीजनल लेवल में हमारे एम्स खुले, उन सारे लोगों के साथ बातचीत हो रही है और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं. अभी हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने इस संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के विकास के लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक STC कंपोनेंट होता है. उसके माध्यम से हम सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम करते हैं. तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ क्लोजली हम कर रहे हैं और हमारे मंत्रालय में जो रिसोर्स गैप जहां पर आवश्यकता होती है उसको इस कार्य योजना के साथ मिला करके काम करते हैं. श्री जी माधवी. Thank you very much, sir. Sir, estimates suggest that 77% of the tribal population has no access to the internet. Has the government conduct any survey to identify the extent of the internet access to the tribal population?
what is being done to improve the situation, sir? Thank you. अध्यक्ष महोदय, अभी आपको सुनकर या सदन को सुनकर खुशी होगी कि एक स्पेशल प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसमें लगभग 6,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है और 7,000 गांव में इंटरनेट व्यवस्था स्पेशल तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्शन 4G कैसे उपलब्ध कराया जाए वो सारे ट्राइबल विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 246 श्री राजवीर सिंह, श्री भोला सिंह। क्वेश्चन नंबर 246 अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। Answer has been placed before the House. जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हुआ है कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार ने हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास पर शोध करने के लिए अब तक किन किन केंद्रीय शोध संस्थाओं की स्थापना की है और क्या सरकार उनकी प्रगति से संतुष्ट है? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो स्कीम चलाई जाती है उसके अंदर जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की स्थापना केंद्र सरकार नहीं करती है, बल्कि उसमें जो 6 राज्य हैं हिमालय के आसपास वाले, उसकी राज्य सरकारें प्रपोजल सिलेक्ट करके केंद्र के पास भेजती है। जो हमारी डिवीजन है वो उसका मुआयना करती है और उसके बाद सरकार उनको फंड्स देती है। और अभी जो है पिछले कुछ वर्षों में उनको बढ़ाया गया है, तो 23.86 करोड़ से अब जो पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है वो पिछले साल के मुताबिक इस साल 47.38 करोड़ है। और उसमें जो संस्थाएं हैं वो भी 117 से बढ़कर 203 हुई हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं वो राज्य द्वारा, उसमें कुछ ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं और अन्य बॉडीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो राज्य भेजता है। और सिर्फ कुछ एक प्रदेशों के अंदर, खासतौर पे अरुणाचल और सिक्किम के अंदर जो है 90:10 का रेशो रखा जाता है, बाकी जगह 75:25 का रेशो रहता है। दयाल चंद मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, राजस्थान भी सांस्कृतिक विरासत में कम नहीं है। विश्व में कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया में आता है तो राजस्थान जाने का जरूर उसका मन होता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना है कि जब प्रसाद योजना थी तो 2018 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक मोहनजोदड़ो है जो 5000 साल पूर्व की वहाँ की सभ्यता है कालीबंगा में, जिसको 1952 में BL लाल साहब ने उनको देखा था, माथुर साहब ने देखा था, और मैं खुद अभी भी उनसे मैं मिल के आया था। उनकी आयु 100 साल से भी ज़्यादा उनकी आयु है। उसके लिए केंद्र सरकार ने राशि जारी की थी। एक भटनेर दुर्ग है वहाँ पे, उसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने 2018 में जारी की थी, लेकिन ASI अभी तक उसको परमिशन नहीं देती है इनके डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में, क्योंकि जब वो अगर दीवारें उसकी टूट जाती तब जाके वो परमिशन देती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये मैं जानना चाहता हूँ कि कालीबंगा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो कालीबंगा सभ्यता उसको और भटनेर दुर्ग को जब मॉनिटरिंग इसकी किस प्रकार से होती है, अगर नहीं होती है तो मॉनिटरिंग सरकार को करनी चाहिए। और मेरा आपसे आग्रह है कि जो राशि दी है क्या केंद्र सरकार उसको कब तक लगाने में सक्षम करेगी? धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न बिल्कुल ये क्या हिमालय का लेकिन ये राजस्थान में आ गया। जी, लेकिन हिमालय से मोहनजोदड़ो तक आ गए। वो मतलब रेगिस्तान तक पहुंच गए। लेकिन उसमें मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि ऐसी ASI की व्यवस्था है, उसमें यूनिवर्सिटी साथ लगी रहती है और अभी राखीगढ़ी और अन्य ऐसे स्थान पाए गए हैं जिसमें धोलावीरा को इंस्क्राइब भी किया गया है। इनका जो प्रश्न है वो स्पेसिफिक कालीबंगा पर है,
कालीबंगा से संबंधित जो भी उचित जानकारी होगी मैं माननीय सांसद तक पहुंचा दूंगी, और खास तौर पे इस प्रोजेक्ट को जिसको इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है उससे रिलेटेड सब डिटेल इन तक पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 247 श्री कृपाल बालाजी तुमाने। क्वेश्चन नंबर 247 माननीय मंत्री महोदय उत्तर सभा पटल पर रखा जाए। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक में काफ़ी लेबर होते हैं। माइनिंग में काम करने वाले लगभग 2 लाख लेबर है WCL और मॉइल में, और MIDC में भी काम करने वाले लगभग उतने ही लेबर होंगे। 2019 में 18 में घोषणा हुई थी और 19 में हमने भूमि पूजन किया था। उस समय संतोष गंगवार साहब जो उस समय के लेबर मंत्री जी थे, और हमारे दूसरे केंद्रीय मंत्री नागपुर से आप जानते हैं वो भी थे। हमने भूमि पूजन का बहुत बड़ा सरकार की ओर से कार्यक्रम किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय वो अस्पताल का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। सरकार ने उसके लिए पहले एक जमीन दिया था, फिर वो जमीन बदलने के लिए कहा गया, वो जमीन बदल के दूसरी जमीन MIDC के अंदर ही दी गई है इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अस्पताल का काम क्यों रुका है और उसकी क्या कठिनाई है, और आप कब तक इसको शुरू करने के लिए प्रयास करोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ESIC के लगभग देश भर में 57 अस्पतालों में इस समय काम पेंडिंग है। उसके अलग अलग कारण हैं। कुछ कारण तो जमीन का पोजीशन नहीं मिल पाना है, कुछ कारण वहाँ पर अभी एजेंसी के द्वारा कार्य को जो नक्शे के साथ शुरू करना है वो शुरू नहीं हो पाना है। हमने ESIC की पिछली बैठक में इसके लिए एक डैशबोर्ड का गठन किया है, और अब जितने भी अस्पताल हैं ये सारे ESIC के डैशबोर्ड पे आएंगे। जिनकी भी प्रक्रियाएं लंबित पड़ी हैं उनको हमने व्यक्तिगत रूप से ही पत्र भेजे जिन सांसदों ने मुझे दिया है, और इन सब सारी कार्यवाहियों को अब हम पूरी तरीके से एक पोर्टल के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री। शुरू हो जाएगा और लेबर को न्याय मिलेगा। मैं आज की तारीख में वहाँ पर जो अभी एक ESIC का नागपुर शहर में जो अस्पताल चल रहा है, उस अस्पताल की हालत बहुत ही खराब है। यानी वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। बेड तो 100 बेड का अस्पताल है, एक सारी सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, एक्सरे का एक मशीन है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा थ्रू जानना चाहता हूँ कि सर जब तक आप इस अस्पताल में जो उस अस्पताल में आप आगे सुविधा देने वाले हैं वो चालू होने तक क्या इस अस्पताल में सारी मशीनरियाँ आप देंगे? और दूसरा एक छोटा उसके साथ में मेरा सवाल है कि वहाँ पर थोड़े बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, तो क्या आप उसकी, क्योंकि जो टेंडर होता है, टेंडर जिसको मिलता है उसको काम नहीं मिलता, कोई और ही काम करते रहता है, तो इस बारे में भी सरकार उसकी तरफ ध्यान देंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अगर कोई ये विषय संज्ञान में लाए तो निश्चित रूप से उनके द्वारा लाए गए पर्टिकुलर विषय को मैं पूरी तरीके से संज्ञान में लूंगा। पूरे देश भर में ESIC के 160 अस्पताल और 18 मेडिकल कॉलेज चलते हैं। उन सब विषयों में एक लंबे समय से जो भर्तियां भी पेंडिंग थी उसको भी हम लोगों ने इस बार निकाला है, और जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित ESIC और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ESIC में जो तनख्वाह का अंतर था उसके लिए भी ESIC बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है। भारत सरकार की इस योजना के द्वारा लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थी और उनके 12 करोड़ परिवार वाले आश्रित हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे मंत्रालय को जो ESIC की सुविधाएं लोगों की सेवा के लिए है, आप जो विषय पर्टिकुलर अस्पताल के लिए मेरे संज्ञान में लाए हैं, निश्चित रूप से मैं आपको अपने कार्यालय में बुला के उसको आपकी समस्या का समाधान करूंगा। क्वेश्चन नंबर 248 श्री अशोक कुमार यादव। सदन पे रख दें। Laid on the table of the House. Question number 249, Sunita Dungal. 249. रखा गया। श्री चंद्रशेखर साहू। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विभिन्न मुद्दों पर
निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री प्रद्योत बोरोदोलई, मनीष तिवारी, इटी मोहम्मद बशीर, के मुरली देवन, E.B. डन, राजमोहन उन्नीथन, हनुमान बेनीवाल, मानिकम टेगोर, एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ, गौरव गोगोई, बेनी बहनन, अधीर रंजन चौधरी, M.K. राघवन, तिरुमावनन, के सुरेश जी। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान की गई। शून्यकाल आज इस चर्चा के बाद शून्यकाल चलाएंगे। पहले 12 बजे चर्चा शुरू करेंगे, उसके बाद चलाएंगे। 9 व्यवस्था दे चुके हैं जो दे चुके हैं, अब दोबारा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। सभा पटल पर रखने वाले पद अभी बताएंगे। आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज जो आज लोकसभा की कार्य सूची में अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 से अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में से क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 5 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 डॉक्टर सुभाष सरकार। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 महासचिव। Received from Rajya Sabha regarding nomination of Shri Jugal Singh Lokhandwala, member Rajya Sabha, to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. आइटम नंबर 8 श्री उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 4 प्रतिवेदनों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 डॉक्टर शशि थरूर। महोदय, मैं आज की कार्य सूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 32वां, 33वां, 34वां और 35वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री मोहन भाई कुंडारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध विभाग संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 315 और 316 प्रतिनिवेदन प्रतिक्रिया सभा पटल पर रखने का अनुमोदन लेता हूं। 7 के संबंधित मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इससे संबंधित विषय सभा पटल पर रखने की इजाजत उनको दी जाती है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा। श्री मरगनी भरत। Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. At the outset, I would like to thank the Honorable Minister Gadkari ji for considering Andhra Pradesh as one of the progressive states, sir. I'm so grateful to stand in this noble house to speak on demand for grants, road and transport, sir, which is led by one of the efficient ministers of this government, sir. And also, sir, he executes each and every राज्य मंत्री
Sir. अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, राज्यसभा से भी आ रहे हैं. So thank you, sir. Sir, he executes each and every single project with meticulously planning, and executes with passion, sir. Sir, I take this opportunity to express my gratitude. Last month, the Honorable Minister Gadkari ji happened to visit to my state of Andhra Pradesh, sir, where he sanctioned and inaugurated 20,000 crore worth of road infrastructure, sir. On behalf of my pragmatic Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, and my people of Andhra Pradesh, we are indeed very thankful to this government, sir. Sir, as the Honorable Minister would be knowing, as Andhra Pradesh state is the second longest sea coastline, sir, with road and infrastructure, sir. Sir, and also, sir, it is on the coastline. It is precisely proved to be bane for natural calamities, sir. Sir, and also, sir, the natural calamities like floods and the cyclones, the roads got devastated, sir. And I request through you, sir, to the Honorable Minister to grant financial aid to the state of my Andhra Pradesh, sir. Sir, and also, sir, especially in my constituency, I would like to mention few of the points, sir, where some of the concessionaires or contractors with the shabby maintenance, the poor maintenance of the roads, sir. Sir, especially where my city, Rajamahendravaram, which is on the national highway, sir, where the city got extended towards the national highway and even crossed 5 kilometers and above to the national highway, which has more than 500,000 population as per 2011 census, sir, where the Honorable Minister has sanctioned in the last government some of the flyovers, sir, in the year, perhaps in the year 2018. But still, sir, the execution of the flyover works, due to some technical issues, it is procrastinated, it is being delayed. So I would like to know from this house, through you to for the minister, sir, why the works is being delayed. So one junction I would like to quote here, I would like to name the junction that is called to be a dreadful junction, dead junction, called Morampudi Junction, sir. Morampudi Junction, where I could see on record, I'd like to keep on record, where in the year, because there are many black spots, sir, we required flyovers for that black spots everywhere, because where the East Godavari district got bifurcated for the police department as a Rajahmundry urban district, sir, where I would like to mention here in the house, in the year 2018 is somewhere around 90 accidents with a death around 29 people died and injured 109. In 2019, 119 people were killed, sir, and deaths were around 42 and seriously injured were 121. In 2020, sir, 116 accidents were taken place, 36 people were killed and 115 injured, sir. Sir, likewise, the list goes on, sir, as per the traffic police records, sir. Sir, I'd like to read out the junctions also, sir, where the Rajahmundry city limits, where the national highway passes through the city limits, sir. I'd like to read out the junctions. One is Rajanagaram Junction, sir. I would like to place on record, sir, because these junctions, we required flyovers and center divider lightings and also service roads and high mast lights. So I'd like to read out the junctions, sir. One is Rajanagaram Junction, sir, Divancheru Junction, sir, Lala Cheru Junction, sir, Morampudi Junction, ONGC Junction, Bammuru Junction, Vemagiri Junction, Horlicks Factory Junction, Vemagiri Junction and Kadiyapalanka Junction, Burilanka Junction, Pottilanka Junction. These all the junctions where this many accidents were taken place, sir. Sir, I'd like to request to the minister to be magnanimous and sanction the flyovers wherever it is required. And last couple of months, I happened to meet the Honorable Minister
where he considered Rajmahendravaram and sanctioned a bypass road, sir. Due to some technical issues, the works haven't taken place up till now, sir. So I request through you to expedite the works immediately, sir. Sir, and also the laying of the roads is very highest priority, sir, and it plays a pivotal role in the growth trajectory of our country, sir. And at the same time, the road safety measures is a double priority of this government to take place, sir, because the road safety measures are not up to the mark, sir. Because when you happen to see the death toll and the accident rate, almost 11% of the world accidents are happening in our country, sir. So the government should seriously think on the road safety measures, and at the same time, the government has to see the standards of the vehicles, whether the Vehicle Act, Motor Vehicle Act of 2019, where it was passed in this house, in the parliament, sir, whether it is being implementing properly or not, the government has to monitor continuously, sir. Sir, and also, sir, my main points, and at the same time, sir, the roads has increased apparently in this past 10 years from past decades, sir, and at the same time, the number of vehicles also has increased beyond the road, sir. Sir, also, sir, but when it comes to the violation of the rules, let me put on record for young India, sir. Sir, we are all educated, and many of us in a hurry going to our respective destinations, we violate, many of us violate the rules and the traffic rules, sir. Sir, the stringent laws has to be formulated by Government of India and the Ministry to curtail the accident rate, sir. As I have one suggestion, sir, as why can't the insurance premium may be linked with the traffic violations. Many traffic violations, the insurance premium will be very higher, and less traffic violations, the insurance premium shall be incentivized. Why can't the government plan in such a way, sir? And the other hand, sir, on the other hand, there are some officers I don't want to take their names, but the below standard officers, where I told you, I mentioned right now in this house, sir, before, about the dreadful junctions and accidents, sir. Sir, who is responsible for the accidents, and who is responsible for the people who were killed brutally in the road accidents, sir? Because it was sanctioned in the year 2018, still now, up till now, it has not been started yet, sir. So who will take responsibility for this, sir? And I wanted to quote, sir, laying the roads is not that difficult, sir. But maintenance of the roads and road safety measures with the minimum revenue expenditure, with minimum accident rate is something challenging, sir. So I'd like to request the Minister to focus on this area, sir. Sir, please. our party has more than 10 minutes, sir. Sir, and also, sir, I'd like to make some notes, sir. I wholeheartedly appreciate the ministry to get the highest allocation of budget. It is an increase in terms of allocation of 22 to 23 with 68,000 crores hike in the absolute terms, sir. And the capital expenditure is pegged at around 1,87,000 crores, sir. And the revenue expenditure is around 11,000 and odd crores, which is quite welcoming, sir. Sir, the Honorable Finance Minister, in her budget speech also, she mentioned about one innovative program called Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan for express ways and rapid movement of people and goods, sir. Sir, the ministry happened to announce that around 25,000 crores
is been investing with an innovative ideas. And I'd like to know how we're going to mobilize 20,000 crores as the Honorable Minister has mentioned in her speech, sir. Sir, the House would like to know what are the innovative methods, in what way the government raised for the Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan, sir. Sir, I would like to give one of my suggestions, sir. So why government plan to construct, solar panelings in the middle of the roads, on the dividers, so that the renewable energy, as our country has a long stretch of national highways and road structure, why can't government plan the solar panelings in middle of the roads so that the renewable energy can be produced? As per the Niti Aayog, sir, by the year end of 23, the three-wheeler... Honorable Minister, three-wheeler Honorable is making so many suggestions. Sir. Please. Sir, as the Niti Aayog has suggested, as proposed, by the year of 2023, the three-wheeler electric vehicles has to take a major role, sir, and also the two-wheeler electric vehicles by 2025, sir. So where the power and energy comes from? Our major power is generated from the burning of the fossil fuels, especially from the thermal energy. Sir, we need to think on renewable energy. So this suggestion of erecting the solar panels in the middle of the roads, it makes a major impact, sir. So unless and until we plan the what you call the raw materials, the petrol, the electricity from this renewable energy, planning to implement the electric vehicles is very challenging, sir. Sir, two more minutes, sir. I have many things to go ahead, sir. First you have gone through your constituency, then comes to general points. First yes, sir. Yes, sir. Now please conclude. Sir, and I'd like to address why the funds have confined for the states in terms of the roads for the states, sir. Sir, as we all know, in the year 2017 to 18, the Government of India has allocated round about 800 crores for the state roads, sir. But we have confined and restricted to 250 crores in this budget 22 to 23, sir. We should not forget the Government of India is collecting cess on petrol and diesel, almost 33 rupees per litre, sir. Sir, for road infrastructure, where the devolution of taxes, it is not being distributed to the states. So I request through you, sir, to the Minister to distribute the funds yes. And give us the more financial aid for the states also, sir, as a cooperative federalism. Yes, sir. please. Now, Sir, I have two more minutes, sir. Sir, when it comes to the networking of the roads, India is placed as the second second largest road networking, sir, with a network of around 64 lakh kilometers, sir. That is all on record. That's all on record. Now yes, you put sir. your bullet Sir, points. Two minutes, sir. And India is placed after United States of America, and which includes of 1.3 lakh roads of national highways and 1.8 lakh of state highways. And under the dynamic leadership of the Prime Minister, we will certainly cross and will be there in the now, top Sri spot, ST Hassan. Sir, I have 2 minutes, sir. Kindly give us, sir. You have already taken more than 20 minutes. Please. Sir, sir, as we all know that, sir, the Nitin Gadkari is the best person to know about our road system than anyone in our country, sir. Sir, I would like to say about Hassan, the issues relating to my state, sir. I've already spoken about your constituency, state, general, everything. Please. Now, ST Hassan, please. Then now. NH 516E has declared as Green National Highway Corridor. It falls in my constituency. I wish to know the progress of R&R and steps taken to release the money for R&R, sir. And also, sir, the Schedule 13 of AB Reorganization Act mentions mandates to construct a rapid road connectivity from Amravati to Hyderabad and important cities
in Telangana, which is the roads to the important cities in Telangana, sir, which is the progress, what is the progress of this? Kindly may explain. And also 33 ROB and RUBs are going to be constructed under Setu Bharatam in Andhra Pradesh, sir. The details may be given, sir. Yes. Sir, the final 2 points, sir. Sir, the Bhogapuram to Bhogapuram 6-lane road, sir, which reduces the distance for Visakhapatnam port and even for Chhattisgarh and Odisha, sir. And the highway, if we expedite the highway at the earliest, and the Government of India also proposed Bhogapuram airport Now, also, ST sir. Hassan, please. Sir, the final point, sir. Final No, please, point, please. Sir, there are more than 450 black spots identified in Andhra Pradesh, sir. The ST national Hassan. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Yes, please. आपने मुझे No, you are not obeying the directions of the. Greenfield Highway at Krishnapatnam Port, sir, with an estimated cost of 462 crores. And also from Nellore to Krishnapatnam Port with an estimated cost of 360 crores, sir. What is the present status of the above roads and whether there is any cost and time overrun by this, sir? Sir, ADB has crossed 3,000, has approved 3,500 crores loan to the Visakhapatnam and Yes, Chennai Hassan, corridor, please, sir. please. I would like to. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपने मुझे सड़क परिवहन और राज्य मार्ग पे बोलने का मौका दिया. सर, मैं कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को आपके माध्यम से मंत्री जी को, सरकार को बताना चाहता हूं. सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे हाईवे जो दिल्ली से लखनऊ जाता है, मंत्री जी मेरे ख्याल से 25 साल हो गए इसे बनते हुए, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ. और इतना इंपॉर्टेंट हाईवे है, आज भी 6-7 जगहों के ऊपर इसमें कार्य नहीं हो पा रहा. बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं. मेरठ तक तो एक्सप्रेसवे बन गया है, मेरठ के आगे बहुत समस्याएं हैं. और एक समस्या मंत्री जी खास तौर से कटरा के ऊपर है, जहां पर शाहजहांपुर से पहले ओवरब्रिज नहीं बन पाया है और वहां पे तकरीबन 1-1 घंटे 2-2 घंटे के जाम लगा करते हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे देखते हुए इस इम्पोर्टेंट हाईवे को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें. मेरा दूसरा हाईवे जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्री जी, एक रोड मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक बड़ापुर एक इलाका है, बड़ा कस्बा है, इसके बीच में से एक रोड जाती है और ये रोड आगे कोटद्वार से ये बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जाती है. आपको ये जान के हैरत होगी कि ये बीच में जो रोड जा रही है, ये कुछ जगहों के ऊपर 9.5 फीट या 10 फीट की है केवल. अगर 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो जाम लग जाते हैं. तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बड़ापुर बस्ती का बाईपास बनना बहुत आवश्यक है, ताकि सारे श्रद्धालु, ये रास्ता भी शॉर्ट है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का, ताकि सारे श्रद्धालु बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे और काम पूरा करें. मंत्री जी, एक हाईवे जाता है मुरादाबाद से काशीपुर होता हुआ और आगे गढ़वाल तक. इस हाईवे के ऊपर विश्व प्रसिद्ध एक उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसमें तमाम दुनिया से लोग पर्यटक आते हैं. मुरादाबाद से लेके काशीपुर तक रोड इतनी खराब हो गई है कि अगर उसमें आप 20 से या 30 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा नहीं चल सकते. बाहर के पर्यटक क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे? आपने ये सैंक्शन कर दिया है, 4 लेन करने की बात करी है. बीच में एक बहुत संकरा पुल पड़ता है जिसपे एक तरफ से ही ट्रैफिक पास होता है और वहां पे भी बहुत लंबे जाम लग जाते हैं. आपने पास किया है 4 लेन, लेकिन न जाने कुछ वजहों से वो आगे काम हो नहीं पा रहा है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए इस काम को करा दिया जाए, ताकि जो फॉरेन पर्यटक आते हैं वो आसानी से कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जा सके और आगे रानी खेत वगैरह भी वो जाकर घूम सके. बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, अब बहुत बुरी हालात के अंदर है. मेरी ये 3 डिमांड्स हैं आपके लिए. मैं समझता हूं कि आप इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए जल्द से जल्द समाधान करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट श्री सुनील ततेकरे. Sir, thank you very much for giving me an opportunity. 1 second. Those members who would like to
lay the written speeches on the table of the House. The Honorable Speaker has allowed to lay the written speeches on the table of the House. Yes, Sri Sunil. There are a lot of expectations of the Konkan people for long since pending Mumbai-Goa highway, that is especially from Panvel to Paraspa to Goa, Panji. Especially the first part, Paraspa to Indapur, 8-10 years that work is in progress. But unfortunately the bituminous part was there, and due to heavy rain like Kerala in Konkan also, this bituminous road get every year damaged. So I urge Honorable Gadkari ji for making this road concrete, and in the presence of Mr. Sharad Pawar ji. So I would like to urge for that. Last 12 years we are waiting for that, especially Konkani people from Raigad, Ratnagiri, Sindhudurga and going up to the Goa. They are traveling on that road. So especially that road should be taken on the priority. Another thing is from Indapur to Mahad, especially in the Mahad, where there was a lot of flood in the last year because of the huge filling for the road. The water logging is being there. Old Savitri Bridge is not yet dismantled there. So that is why it was cause for the heavy flood in the Mahad and that area. So I would like to urge for the Minister for that also. Near Polatpur, even then underpass is there, 30 feet road is being digged and people are getting harassed. So that work is also there. Especially I would like to urge one road which is going to Chhatrapati Shivaji Maharaj Historical Fort. That is the capital of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Empire. Hence, considering about the fact to make National Highway NH 166F going towards the Raigad Fort as an historical path by considering beautification point, historical signboards, monuments showing history of the Chhatrapati Shivaji Maharaj and importance of the Raigad Fort. I would like to urge for that, especially for beautification spot at the entry point and exit point of the tunnel in the Kashedi Ghat on the National Highway 66. That is also important. One another thing is most important. When I became the Member of Parliament of this House, provided VUP at near Avashi to Gunde near Lote MIDC. 35,000 workers are working in the Lote MIDC. About 15 to 20 villages are there in Gunshi area. I had requested on the site even also, and even in estimate committee also, to sanction that particular portion therein. Another thing, one national highway was announced, Varkar to Alibag, in my Raigad district capital, I mean the place. That is not yet being considered therein. That is the most important. Another thing, one road passing through my district, Murbad, Karzat, Khopoli, 80% work is being completed. So heavy loaded vehicles are traveling along that. 60, 70 years old bridges are there. When they will collapse, I don't know. One sad incident happened near Savitri River in 2-4 years past. Same incidents can be repeated therein. So I would like to urge to get those bridges also completed so that these things cannot be happen repeatedly in my district. Especially 2 highways, national highways are being announced by the central government. Out of that, 80% work is being done. I would like to urge in my parliamentary constituency, one road goes from Wakand to Khopoli, Paradi and Pedli. Both the villages require the bypass therein. So those 2 bypass were also sent in the second phase for the approval. Another thing, one road goes from Pune to Dighi. That is also a port. Pune is also an educational hub in the Maharashtra. So 2 bypasses are required near Mangaon and near Indapur also. So that should be also considered on priority basis. That is what I am requesting therein. Okay. Another thing, sir, I would like to request one thing, especially this Paraspa to Indapur. We are harassed, I am staying over that. And due to heavy rain, always thousands of lakhs of people are going to the Konkan and especially to the Goa. So that road is also likely to be important. Another thing, from JNPT, one of the first port which is giving the maximum to the government of India. So that port is making a lot of traffic therein. So that road also, especially from JNPT to Paraspa, that goes to Karzat and to the Murbad, that is also being required. So I would like to request Honorable Minister through the Ragat House, Honorable Gadkarji is from the Maharashtra. I know him since last so many years.
I worked with him as an MLA. When I was Minister of State in my cabinet, Gadkari was also President of BJP in the national level. So many things we have done with each other. So I would like to urge, especially for this Konkan highway, for that. Thank you very much, sir. Thank you, Shri Chandrasekhar Prasad ji. अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर बहस इस चर्चा में भाग लेने का जो आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजमार्ग मंत्रालय पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस आवंटन में से 67% NHAI को दिया गया है। इसके बाद सड़कों और पुलों के लिए 64.573 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान में NH नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार की परिकल्पना की गई है। वित्त पोषण किए नवीन तरीकों के माध्यम से अलग से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसका परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा। देश में NH निर्माण की गति 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किलोमीटर प्रतिदिन छू गई है। यह सभी कदम स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय गडकरी जी NH के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार ने भी सड़कों के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है और बहुत सारे मैंने टोला तक को संपर्क सूत्र से जोड़ दिया गया है। बिहार के इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है कि भारत सरकार और कुछ आर्थिक मदद करे। आदरणीय गडकरी जी ने से मैं एक मांग पुनः करता हूं, जहानाबाद से अरवल जाने वाली रोड पर अंडरपास NH 110 के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने के लिए हम कई एक बार आग्रह किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसको नकारा जा रहा है। हम फिर से आग्रह करते हैं कि जहानाबाद में जो 110 पर अंडरपास है उस पर फ्लाईओवर बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, PM पैकेज में अन्य योजनाओं के माध्यम से बिहार को काफ़ी अच्छी संख्या में NH के निर्माण और चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली है। वहाँ NH के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में NH 83 एवं NH 110 पर काम चल रहा है। यह एक सराहनीय कार्य है और एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 119D बनने जा रहा है। इसके लिए हम पूरे बिहार की जनता और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं। NH को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए संसदीय क्षेत्र से आने वाले जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोड एक्सीडेंट भारत की एक बड़ी त्रासदी बनकर उभरी है। भारत के 3% GDP सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की वजह से कम हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 10% अकेले भारत की है। मरने वालों में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, जो और भी गंभीर बात है। मरने वालों में 65% 18 से 35 वर्ष के लोग होते हैं। यह भी एक संवेदनशील बात है। महोदय, तमाम कदम उठाए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं और उनसे होने वाली मौतों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। बढ़ती आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुपात में आधारभूत ढांचा बनाने में कमी इसका एक बड़ा कारण है। महोदय, इसके साथ ही गलत तरीके से ओवरटेक करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करना जैसे कारणों से सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही है। सड़कों में गड्ढे से भी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं। 2013 से 17 के बीच सड़कों पर बने गड्ढों के कारण हुई दुर्घटनाओं के चलते 14,926 लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा है। महोदय, इसके अलावा कुछ और विषय है जिस पर केंद्र सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। राजमार्गों के निर्माण के समय गुणवत्ता को बनाए रखना देश हित में एवं समाज हित में है। ऐसी शिकायतें मिलती है कि NH की कुछ परियोजनाओं में क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित नहीं किया जाता है। जीरो टॉलरेंस
अगेंस्ट करप्शन का पालन करते हुए राजमार्ग मंत्रालय को स्थानीय सांसदों को भी कहीं न कहीं से उसमें सहभागिता करानी चाहिए। राजमार्गों निर्माण की गुणवत्ता मेंटेनेंस करने में कहीं न कहीं पकड़ होनी चाहिए और सड़क के संबंधित अनेक परियोजनाओं को पूरी होने के बाद भी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से धन का इंतजार करना, यह भी एक बहुत संवेदनशील बात है। इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि बिहार सहित देश के अन्य राज्य सरकारों के पास संसाधन सीमित है और अगर उन्हें समय पर फंड मिल जाता है तो ये परियोजनाएं जल्दी पूरी हो सकती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में मैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री M.K. विष्णु कुमार जी। Thank you, Chairperson. I am here to, first of all, thank to Madam Sonia ji and Sri Rahul ji for allowing me to speak on demands on grants for roadways and highways, road transport and highways. It is a very important subject. It is not a subject that can be neglected because your government is asking almost 2 lakh crores. In 2021-22, it was 1.35 lakh crores. In 2020 and 21, it was 98 crores. Why there is so much of escalation and the government has not come clean with what are the new projects this year this road transport is going to take? Because there is almost 65,000 crores, you are asking more. For that, what was the work done in the previous year? And how many kilometers of road you are going to relay or newly lay? This kind of clarity is not there in your statement. And to achieve $5 trillion Indian economy, this road transport, road network is very, very important. Honorable Chairperson, I would like to say the Treasury bench is very, very proud in claiming themselves as the second largest in the world of covering 63.5 lakh kilometers of roads coverage. This is second in the world, no doubt. The first stands United States of America, their beloved friend Trump was there. Now, I would like to say one more important point. See, overnight you cannot lay a road. It was the foundation of Congress party, government, the previous government, the Panchashil principle by Nehru, by Indira ji, by Rajiv ji, by Madam Sonia ji and Dr. Manmohan Singh. These governments have laid a strong foundation. That is why India is today second largest in road networks, covering 63.5 lakh kilometers network. Second to the United States of America. Why I will say a calculation, simple calculation. Your Bharatmala project, your main project, flagship project of Prime Minister, it is covering 34,500 kilometers to be laid in the span of 5 years at the cost of 5 lakh crores. But till now, I am very sorry to say, Honorable Chairperson, this government is able to complete only 6,900 kilometers of road out of 34,500 kilometers in this period of 5 years. They are supposed to finish by 2024. Only 35% of work is being completed. That is why I am saying it is a foundation of the previous government. This government is standing number 2. India is standing number 2 in the world. But unfortunately, ironically, what is the quality? Germany is number 1. According to your data, not my data. Germany is number 1. United States of America is number 14. We are standing number 44 out of 160 countries. There is no independent evaluation of the road quality. Look at the quality of the roads. It is pathetic. But the amount of money being spent is huge. Nowhere near the expectation of the common man. Almost 1 point out of 2 lakh crores that they demand, 1.87 lakh crores is coming from the capital expenditure. Only 11,500 crores is the revenue expenditure.
At this point of time, I would like to say one more important thing. What is the road safety that we are having? Out of 2 lakh crores that they are demanding, only 356 crores are being spent on road safety, 1.67% of the total budget, whereas US is spending 6% of their budget. So this thing, more number of fatalities, road accidents, because of the speed of the vehicles has increased, number of vehicles have increased, and the poor quality of road with no safety and precautions being taken. Unfortunately, we are losing lot of valuable lives of the common man. So this thing has to be considered very seriously by this government. NHAI, Nahai, is taking almost 1.35 lakh crores of your total budget of 2 lakh crores. When NHAI is functioning very well, according to you, I am saying the office is very big, the directors are very good, they're responding very well, but the project is getting delayed, undue delay is of the NHAI's capacity. When NHAI is there, another company act, private limited company called National Highways Connectivity Limited or Logistics Limited, NHLL, Logistics Limited, which they explained that this company act, new company is being formed only for the connectivity of the ports. They are giving only 1,000 crores. If you say for the better efficiency, a new company is being formed, why then you burden NHAI with 1.35 lakh crores? Because they are unable to complete the projects in time. What happens is mainly because of the online tender, people sitting in somewhere without analyzing the real picture of the road that to be laid, they are quoting, they are participating in tender being awarded. But when they come to the field, then there are so many problems like forest clearance, environmental clearance, availability of raw material, water, local problem, all these things come. There is no quick exit policy from NHA. And very unfortunate thing, in my own Arani Parliament constituency, one road from Zindivanam to Krishnagiri, that is being laid for more than 10 years. The contractor says, I am ready to leave, I am not able to work. There is so much of escalation. As I said earlier, why there is so much from 1.35 lakh, suddenly you are allotting 2 lakh crores. But what is the new project you are bringing? There is no clarity. There is no white paper. Finally, the contractors, you know what they do? They go into the arbitration. They are unable to complete. They go into the arbitration and they manage to get the justice and more 100 crores, 200 crores demand from the NHA. Apart from allotting funds for laying the roads, the penalty, instead of collecting from the contractors, the NHA is giving back. So in this house, I request the Honorable Minister to give a white paper, how many projects are being stalled like that, how many contractors are being paid the arbitration for fees, and how many projects the